नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जिंदल, आरवी इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम मुंबई। Today we shall discuss some amendments to the Companies Act which may be beneficial to the companies and the general public. So first of amendment is mandatory demat account of shares of private companies. Now private companies has to demat their share which are holded by the promoters or the general public. तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी अदर देन द स्मॉल कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2023 को जितनी भी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड हैं, जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती हैं, उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल इवन फॉर निधि कंपनी एज वेल एज होली ओन और सब्सिडी कंपनी, इन लोगों के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। नाउ यहाँ पर एक स्मॉल कंपनी आया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी? एज पर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a small company is a company which is not a public company and has a paid up share capital equal to or below rupees 4 crore or such a higher amount specified not exceeding more than 10 crore. A turnover equal to or below to 40 crore or such higher amount specified not exceeding more than. So a small company cannot be a holding company or a subsidiary company, a company registered under section 8 of the Companies Act, or a body corporate or company governed by any special act. So these are exempt from the small. Now, what is the compliance of dematting? Ensure that company has demat of shares for all shareholders. Company has to get an ISIN for each class of securities. Not to issue the shares in physical mode or either register the transfer in physical mode, but only demat mode after 30 सितंबर 2024। वो अभी आने ही वाला है, कंपनी के पास समय बहुत कम बचा है, फरवरी शुरू हो गया है। Not to issue shares unless the shares of all the promoters directors are in demat form। तो उसको फर्दर शेयर इश्यूएंस के ऊपर भी पाबंदी है जब तक कि प्रमोटर और डायरेक्टर के शेयर डीमैट नहीं हो जाते। और फाइल PAS6 every 6 months within 60 days। तो इसकी जानकारी हर 60 दिन के बाद देनी है। So all the provisions will be mandatory after 30/9/2024। अभी थोड़ा बहुत वक्त है, हर कंपनी को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। PAS6 to be submitted after every 6 months before 30th file or 29th November of the previous of the respective years. Another is beneficial interest. It is also applicable to all companies. So every company has to designate a company secretary who is responsible for furnishing and extending cooperation to ROC and other authority in respect of beneficial interest in shares. In case of non-applicability of the CAS, then KMP as a person responsible for furnishing and extending cooperation to ROC or other authority in respect of beneficial interest in shares.
यदि कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी, नहीं तो उसके अलावा अदर केएमपी, या वो भी नहीं है तो कोई और डायरेक्टर। द डिटेल्स ऑफ सच पर्संस in Form MGT7, that is annual return, or any change in the person to be communicated to the ROC in Form GNL. Conversion of warrants issued by the company. कई बार कंपनीज वारंट भी इशू करती है, तो उनके बारे में क्या? It is applicable to public companies which has issued share warrant before 1st April 2004. So, file Form PS7 giving the details of share warrants on or before 26 January 2024. तो ये डेडलाइन तो चली गई है अभी। कितने लोग बचे हैं और क्या गवर्नमेंट का रुख है, ये समय पे पता चलेगा। कंपनी टू इश्यू नोटिस ऑन वेबसाइट and in newspaper for conversion of warrant to shares in form PAS। तो ये परफॉर्मा है, इसके ऊपर आपको नोटिस इश्यू करना है। Within a period of 6 months, convert the warrant into demat shares on or before 26/4/2020। तो थोड़ा सा ही टाइम बचा है। If not converted, then same will have to transfer to investor education protection fund। यदि आपने नहीं किया तो ये सारा का सारा पैसा इस फंड में चला जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आपका पेशेंस लिसनिंग के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।